Good morning, dear students. In our last class, I had solved few questions from miscellaneous exercise based on chapter number 3, which is based on matrices. Today we will continue the same exercise. I think up to question number 7 I had already explained. Today I am going to solve. This is question number 8. See, question number 8 is A is a matrix, it is given. These are its entries. We have to prove that A square minus 5A plus 7I is equal to null matrix. That is, 0 means null matrix. Okay. So, consider its left hand side. I am going to prove this. That is very easy question. Consider its left hand side. Its left hand side is A square minus 5A plus 7I. So A square means A into A. A square means A into A. And here A is 3, 1, minus 1, 2. Again A into A. So 3, 1, minus 1, 2. Minus 5A. A is 3, 1, minus 1, 2. And plus 7I. I is an identity matrix. And because you can see in each term here, matrices of order 2 by 2. That's why it should be an identity matrix of order 2. Means this one will be 1, 0, 0, 1. Okay. So, next step, multiply these two matrices. So, first row multiplied, corresponding entries of first row will be multiplied to entries of the first column here. So, 3 3 are 9. And 1 1 ja 1 into minus 1 minus 1, 9 minus 1. First row, second column, 3 1 ja 3, 1 into 2, that is 2, minus 1 into 3 minus 3, 2 into minus 1 minus 2. Second row, second column, minus 1 into 1 minus 1, and 2 into 2 4. Okay, so that is A square minus, you can see this is scalar multiplication with the matrix. So this scalar, this constant will multiply each entries of this matrix. So 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 into minus 1 minus 5, 5 2 are 10. Okay, and that is 7 0 0 7. Okay, now next term, next step will be, this is 9 minus 1 8. Okay, and this is minus 15, and this is plus 7. Okay, and this one is 3 plus 2 5, minus 5, this is plus 0. So we know that in addition and subtraction we have to add corresponding entries. So वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. Now minus 3 minus 2 minus 5, and minus minus plus 5, and this is plus 0. After that minus 1 plus 4, that is plus 3, minus 10, and plus 7. Okay. Now you can see this one is 8 plus 7, 15 minus 15, 0. 5 minus 5 plus 0, 0. Minus 5 plus 5 is 0. Minus 3 minus 10, that is minus 7, plus 7, that is 0. You can see this is a null matrix. That is a null matrix. So left hand side is equal to right hand side. Okay. So that is the proof of question number 8. Okay. Now I am going to solve next question, question number 9. Question number 9 is, question number 9. Question number 9 is find x. Find x if this is x minus 5 minus 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3. This is x4 1, that is null matrix. Okay. Actually this is a matrix equation and we have to find out this x.
So you can see these three matrices are multiplied, and order of this matrix is 1 by 3. This order is 1 by 3, and order of this matrix is 3 by 3. 3 by 3, and our order of this matrix is 3 by 1. 3 by 1. Okay. So first multiply these two matrices. Clearly, first row, there is only one row. It will multiply with the first column first. So we have x into 1 x, minus 5 into 0 0, minus 1 into 2 minus 2. Okay. After that, first row second column, x into 0, that will be 0, minus 5 into 2, that will be minus 10, and minus 1 into 0, that will be 0. And first row third column, so x into 2, that will be 2x, minus 5 into 1, that will be minus 5, minus 1 into 3, that is minus 3. Okay, into this is x 4 1 equal to null matrix. Now you can see what will be the order of multiplication of these two matrices, that is 1 by 3, and you can see this is, it has one row and 3 columns, so there is 1 by 3, its order. And what is the order of this one? 3 by 1. So when we simplify this, what we have, this is x minus 2, this is minus 10, and this is 2x minus 8 actually. Okay, and this one is x 4 1. Clearly, because order of this matrix is 1 by 3 and order of this matrix is 3 by 1, so resultant will be a matrix of order 1 by 1. 1 by 1. So this null matrix should be a matrix of order 1 by 1. One row, one column. Okay. I am going to multiply this. What we have? This will be x minus 2 into x, that is x square minus 2x, minus 10 into 4 40, and plus 2x minus 8 into 1, that is 2x minus 8, that is of order 1 by 1. Means only one entry is there, 1 by 1. Got it? See, this is of order 1 by 3, this is of order 3 by 1. Clearly, multiplication of these two, we will get a matrix of order 1 by 1. Okay. So from here you can see, I am going to rub this. You can see this must be equal to 0. So that is minus 2x and plus 2x will be cancelled. We have x square minus 48, minus 48, minus 40 minus 8, that will be minus 48, that is equal to 0. We know that two matrices are equal only when their order must be same and their corresponding entries will be equal. So from here what we have, x square is equal to 48, that is x is equal to what? Plus minus 4 root 3. So that will be the value of x. This is the solution of question number 9. Now I am going to solve question number 10. So read everyone question number 10. Question number 10. Question number 10 is, a manufacturer produces 3 products X, Y, Z, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Okay. This is market first and second, and products 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 and 8,000. ओके, पहले तो आप इसका मतलब आप समझ लो कि क्या है. There are 3 products which sells in 2 markets.
3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z, x, y, z। तो x के 10,000 प्रोडक्ट्स, 10,000 यूनिट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई खिलौना है x टाइप का, y टाइप का, z टाइप का, तो फर्स्ट मार्केट में वो खिलौना 10,000 खिलौना x टाइप का बिकता है। टॉय ऑफ x टाइप 10,000 sells in market first. Toy of type y sells in market first is 2,000 and toy of type z in market first sells 18,000 and toy of type x sells in market second 6,000 toys. 20,000 toys sells in second of type y and 8,000 toys of type z sells in second market. तो ये नंबर ऑफ टॉयज हैं ऑफ द टाइप x, y, z जो फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में बिक रहे हैं। ओके, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि इफ यूनिट सेलिंग प्राइस, यूनिट सेल प्राइस ऑफ x, y, z आर 2.5 rupees, 1.5 rupees and 1 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. 2.5, 1.5 and 1, that is the selling price, that is the if unit sell prices of each. Okay, so selling price of each is in rupees 2.5, 1.5 and 1. 2.5, 1.5 and 1. Okay, so we have to find out total revenue. So total revenue will be, अब देखो क्या करोगे, ये एक मैट्रिक्स बन गया आप ऑर्डर 2/3 का। ओके, सो दैट विल बी 10,000, 2,000, 18,000. I am going to write here this one, स्पेस नहीं बचेगा। This is of order 3/1, sorry 1/3. It should be of order 3/1. This can be written in this form also. This can be written in this form 2.5, 1.5, 1. इसका रीजन है क्योंकि आप देखो ये जो एक मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का है। That is 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 and 8,000। अब ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2/3 का, तो इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या अब ये जो है ये या तो 1/3 के फॉर्म का लिख दें या फिर 3/1 के फॉर्म का लिख दें। तो ये 1/3 के फॉर्म का रहेगा तो इसको हम लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और राइट में भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1/2 का होना चाहिए, या मतलब कि ये जो होना है इसके बराबर होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 3/2 के बराबर नहीं हो सकता। और इसको अगर हम इस साइड रखें तो भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, राइट साइड में रखते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही रीजन है कि हमें ये जो सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स बनाना है वो ऐसे बनेगा नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से बना है, 3/1 के फॉर्म का बना है, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम राइट में रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई ही करना है, राइट साइड में रखेंगे तो 2.5, 1.5 और ये 1 हो जाएगा। दैट इज द सेलिंग प्राइस। दिस इज 3/1। अब आप देखो, क्योंकि ये 2.5 किसके लिए है? x के लिए, ये y की सेलिंग प्राइस है और ये z की सेलिंग प्राइस है।
जाहिर सी बात है कि जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 जो नंबर ऑफ टॉयज हैं जो x टाइप के हैं वो जा करके जो जो सेलिंग प्राइस है x के लिए, y के लिए और z के लिए, तो ये जाके x में ही मल्टीप्लाई होगा। तो x twice of type x should be multiplied with the selling price of twice x। तो इसको यही मल्टीप्लाई होना है, तो अब ये करेक्ट है। ये जो है ये y के लिए है, तो y की सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये जाकर के इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो y जो है जो ट्वाइस है y टाइप के, उनको जा करके y के ही सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंड दैट इज z। इसमें ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब ये करेक्ट है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा ये फर्स्ट मार्केट के लिए और ये सेकंड मार्केट के लिए। क्लियरली आप देखो ये 2/3 का है और ये 3/1 का है, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2/1 का आएगा, जिसमें एक फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू होगा और दूसरा सेकंड मार्केट का रिवेन्यू होगा। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस। ये फर्स्ट मार्केट का और ये सेकंड मार्केट का रिवेन्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो 10,000 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट विल बी 10,000 into 2.5, 10,000 into 2.5, it will be 25,000, 25,000, okay? After that plus 2,000 into 1.5, that is 3,000, okay? After that 18,000 into 1, that is 18,000, okay? Now 6,000, the second row and this column, 6,000 into 2.5, that will be 15000, means 15,000, plus this 20,000 into 1.5, that will be 15 to the 30, that will be 30,000, okay? And plus 8,000 into 1, that is 8,000, okay? So total revenue will be in two markets. I am going to rough this one, no need of this one. So total revenue will be 25 plus 3, 28 plus 18, 28 plus 18, that is 46,000 rupees, okay? And for the second one 15 plus 30, 45 plus 8, 45 plus 8, that is 53,000 rupees. So that is the revenue in from first market, and that is the revenue from second market. So you can check that your answer is correct or not. Miscellaneous exercise on chapter 3, 46,000 and 53,000, okay? So you can write here the answer will be revenue from first market, first and second market are respectively rupees 46,000 and rupees 53,000, okay? Now in the same question it is also given, if unit costs of above three commodities are rupees 2, rupees 1 and 50 paise, rupees 2, rupees 1 and 50 paise respectively, find the gross profit, okay? Listen, now it is given, now CP cost price of unit, CP of unit commodities or articles, whatever you can write, what article is rupees 2, rupees 1
and 50 paise. We have to find out, I am going to rub this one also. We have to find out profit. We have to find out, profit. So first of all we have to find out cost price, because we know that profit is equal to what? Profit is equal to revenue minus cost price. Revenue means selling price, total selling कितना आया, सेल करने पे पूरा पैसा कितना आया. अब उसमें से सीपी कास्ट को माइनस कर दोगे तो जो बचा वो प्रॉफिट हुआ. तो रेवेन्यू तो हमारे पास है, रेवेन्यू के लिए ये है. We have to find out CP. So I am going to find out CP. तो आप देखो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आप देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें. ये टोटल सीपी लिखो आप, टोटल सीपी. तो टोटल सीपी जो आएगा, पहले तो जो मैट्रिक्स मिला था जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा था, दैट इज 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000. और इसमें सीपी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सीपी का मैट्रिक्स आएगा इस बार 2, 1 and this is 50 paise. 50 paise can be written as 1/2 rupees. Rupees 1/2. क्योंकि ये भी रुपीस में, ये भी रुपीस में, this should be also in rupees. So that will be 1/2. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो that will be the CP, cost price. तो ये हम इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसी में से हमको माइनस करना है. तो I am going to rub this one. So CP हो जाएगा आपका, CP एक तरह से for the market first and for the market second. This is for market first and this is for market second. So 10,000 into 2, this first row and first column, 10,000 into 2, that will be 20,000, plus 2 into 1, that will be 2,000, and plus 18,000 into half. Clearly 18,000 का आपको हाफ करना है, तो 18,000 का हाफ कितना आएगा? 9,000. ओके. And for the second row and first column, 6,000 into 2, that will be 12,000, and 20,000 into 1, that is 20,000, and plus 8,000 into half, that will be 4,000. हाफ कर रहे हो आप, so it is 22 plus 9, that is 31,000, and 12 plus 20, 32 plus 4, 36,000. So that is the CP for the articles which sells in market first, and that is the CP of the articles which sells in market second. Now I am going to find out profit. So profit is, this is revenue minus CP. So your revenue is 46,000 and 53,000 minus CP is 31,000 and 36,000. तो आप चेक कर लो, it will be 46 minus 31. 46 minus 31 is 15,000, and 53 minus 36, that is that will be 17,000. So clearly profit from market first will be 15,000 rupees, and profit from market second will be 17,000 rupees. You can check your answer from the answer sheet. So it will be correct, 15,000 and 17,000. So that is the solution of question number 10. Now I am going to solve question number 11. Going to rub this.
question number 11. Question number 11, find the matrix X. To find X, matrix X, so that X, this is 1, matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6. सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है X वो किस ऑर्डर का है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। देखो ये जो है ये 2/3 का है, 2/3 ऑर्डर का है, और ये जो है ये भी 2/3 ऑर्डर का है। ओके, क्लियरली ये जो मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। आई एम गोइंग टू राइट हियर m/p, सपोज कर लो m/p। तो ये प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम हो, मींस p शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा, सपोज कर लो मैट्रिक्स A मिला, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या आएगा, m/3, और ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये 3 हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू 2, m शुड बी इक्वल टू 2। Clearly from here we can say that order of matrix X will be m/p, that is m is 2 by p is also 2/2। okay, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। so let X is equal to 2/2 का कोई मैट्रिक्स आप ले लो, it is equal to X Y Z T ले लो, that is a matrix of order 2/2। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो, क्योंकि अब मैं मिटा करके और इसको सॉल्व करूंगा। so that is the matrix X। I am going to rub this now। now put this X here, so it will be X Y Z T, and that is 1 2 3 4 5 6, that is -7 -8 -9 2 4 6। अब that is, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x into 1 x, 4 into y 4 plus 4y। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x into 2 2x, y into 5 5y। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x into 3 3x, y into 6 6y। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम z into 1 z plus 4 into t 4t। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into z 5 into t 5t। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into z t into 6 6t। so that is the left hand side, and your right side is this one, that is -7 -8 -9 and 2 4 6, that is the second। so we know that because these two matrices are equal, their corresponding entries must be equal। so from here what we have, x plus 4y equal to -7, and this 2x plus 5y is equal to -8, and this 3x plus 6y equal to -9। okay, and z plus 4t equals to 2, this is 2z plus 5t equals to 4, and this is 3z plus 6t
equal to 6. Now you can see this is a linear equation in two variables x and y, and these are the linear equations in two variables z and t. Solving all this, find out the values of x, y, z and t. So this is easy, very easy for you because you have already solved such type of problems in class 10th. So I am going to solve this one and this one first. तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा. तो सपोज कर लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम हियर. सो व्हाट वी हैव, 2 से आप मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 2x एंड प्लस 2 4 जा 8y is equal to 2 7 जा minus, this is 14 and it is 2x plus 5y equal to minus 8. और सब्ट्रैक्ट करना है. सो माइनस, दिस इज माइनस, दिस विल बी प्लस. सो these two will be cancelled. Now 8y minus 5y is 3y and that is minus 14 plus 8 is minus 6. So clearly from here y is equal to minus 6 divided by 3, that is minus 2. ये y फाइंड आउट हो गया. अब इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो. सो फ्रॉम फर्स्ट x plus 4 into y is minus 2 is equal to minus 7. So from here we have x is equal to, this is minus 7 and this is minus 8. So when transfer to right side it will be plus 8. So x will be equal to plus 8 minus 1, that is plus 1. So x is 1. X is 1, y is minus 2. Now I am going to solve any one of these two for finding out z and t. So I am going to rub this. We have no need of these equations now. Now I am going to suppose this one is equation third, that is equation third, and this one is equation fourth. So solving fourth and third, we can easily find out value of z and t. So multiply this third equation by 2 and subtract fourth from here. So when we multiply this one by 2, it will be 2z plus 2 4 ja 8, t is equal to 2 2 ja 4, and this one is 2z plus 5t equal to 4, minus minus minus. So these two will be cancelled. It will be 8t minus 5t, that is 3t equal to 0. Clearly t is equal to 0 divided by 3, that is 0. So t find out हो गया. अब इसकी वैल्यू कहीं पुट कर लो. फ्रॉम थर्ड में ही पुट कर लो. फ्रॉम थर्ड व्हाट वी हैव, दिस इज z प्लस t, that is 4 into 0 equal to 2. Clearly z and this is 0, okay, is equal to 2. So z is 2, t is 0, y is minus 2 and x is 1. So our required matrix will be, I am going to rub this one. So required matrix, so matrix x will be what? That is x, y, z, t. That is x is 1, y is minus 2, z is 2 and t is 0. So that is it. Okay.